Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. So in today's video I am going to be talking about how I take care of myself इस period में, that is इस time के अंदर जब we cannot really go out and to be honest अभी मैं थोड़ा इतना ज़्यादा salons and parlor जाना prefer नहीं कर रही हूँ because of this corona situation and so I've been finding ways कि कैसे I can groom myself घर पे ही and take care of the hygiene and मैंने काफ़ी research करी है and I really want this video to be very informative, so I'll be telling you all the stuff. With this video I expect you to be very open-minded and because I'm going to be talking about everything, facial hair, body hair and everything. It's not that you need to do shaving, it's just me, I prefer shaving and I prefer removing my body hair and facial hair. But if you're very comfortable with your hair, that's completely fine. So this video is in no way trying to tell you that you should be doing that as well. If you want to know more about how the tips and tricks on how you can shave your body and do your facial hair in the right way, because people usually get cuts, right? So I really want this video कि आपको इस वीडियो के थ्रू सब कुछ पता चले, because मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मेरे को इतना मतलब ज़्यादा अच्छे से जो मेरे को समझ में आया वही सब मैंने ट्राई किया है. और मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी किया है, मैं बहुत टाइम से ये सब ट्राई कर रही हूँ. सो दीज थिंग्स आर टेस्टेड एंड जितना मेरे को जो ज़्यादा सूट करता है, आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट. एंड इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई डू इट एंड आप भी कैसे कर सकते हैं, यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल surely know how to do it all and all the myths that are there related to shaving. And yes, let's just begin with the video and do not forget to subscribe to my channel, like this video if you find it helpful and share it with your friends, share it with your family and yes, let's just begin. So firstly I'm going to be talking about facial hair and facial hair is something which can make your face look really clean and all of that. My skin is very sensitive, so after threading and waxing on my face I used to get the area all red और बहुत ऐसे छोटे छोटे से मेरे को pimples हो जाते थे. So then I gave up the idea and then I saw these videos on YouTube. Again, there is everything on YouTube. So I saw some of the famous YouTubers using facial razors and I was really skeptical about it because I thought कि यार अगर कट वट लग गया तो फिर क्या होगा, तो और मतलब ऐसे बहुत गंदा लगेगा ऐसे कट दिखता हुआ. So but फिर I watched ट्यूटोरियल्स एंड कैसे करना चाहिए बिफोर आपको कैसे उसको प्रेप करना अपना स्किन फॉर दी फेशियल रेजर्स. एंड please do not use the normal shaving razors on your face. That's really harmful and you will surely get very thicker hair on face. Like it's good for body hair but it's not good for facial hair. So there are these facial razors that are available on like they are available on Amazon. Shein तो बंद हो गया but Shein पे भी काफ़ी सारे थे and मैंने Amazon से ही लिया था सबसे पहले. And the one I'm using in this video is actually from Shein and I got it before it got banned in India. So that's that. So what you have to do is you should know as to how you have to do it and आपको बहुत you have to be very patient when you're dealing with your facial hair, because अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया so you'll get a razor cut. So you need to be very careful while doing it and very patient और बहुत आराम से बहुत smoothly आपको करना है.
I would suggest that you use a face oil if you have, or any normal oil you have. But I have this face oil from Nykaa, and I use this in the video that I'm showing you guys right now. And you can use any kind of moisturizer that hydrates your skin, right? And you can also use aloe vera gel, any kind of aloe vera gel, fresh or the ones come in the bottle, anything you like. Because why we are using it, because we need our skin to be very very lubricant. And मतलब आपकी स्किन पे एकदम स्मूथ होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लिपरी होनी चाहिए, तभी जो हेयर है वो काफ़ी स्मूथली निकल जाएंगे. एंड वरना आपको बहुत ड्राई स्किन पे नहीं करना है, क्योंकि ड्राई स्किन पे देयर आर 10 times more chances that you'll get a cut. So you need your skin to be very slippery, and gives your skin needs to be very lubricant while you are doing it, and that's the main important thing. And then you have to go in all आपको एकदम slanting में ले जाना है उसको, and you do not have to rush it, and you'll just get a better idea कि आपको कैसे करना है जब आप ये खुद ऐसे यूज़ करेंगे. एंड do it the way I'm doing it in the video. And eyebrows करते टाइम स्पेशली you have to be very very careful, क्योंकि आपकी eyebrows के अंदर बहुत कट लग सकता है. And I just remove the extras, so shape वगैरह नहीं बनाती हूँ मैं. So there's that's easy, but and I prefer कि आप extras निकालने के लिए ही इसको यूज़ करें, वरना you'll just ruin the whole shape of your eyebrow. And मैं इसको ऐसे बीच से रिमूव करती हूँ, जो बीच में बाल हैं एंड जो नीचे बाल हैं. एंड you do not have to just hold the razor vertically. You have to hold it in a slant way, so that it just slips your skin, and it is like a very smooth thing that it is removing your hair. And आप इससे अपने चिन एरिया के पास, अपने आईब्रोज, अपने फोरहेड, अपने चीक्स पे जो है वो सब काइंड ऑफ सब आप फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं. एंड ये इतने ज़्यादा बार नहीं आते हैं, एंड मतलब 1-2 दिन आपके निकल जाएंगे, एंड उसके बाद आपको फिर से करने की ज़रूरत पड़ेगी. बट दैट्स ओके, बिकॉज आप घर पे हो और इतना टाइम नहीं लगता. अगर आप रोज़ भी कर रहे हो तो इट जस्ट टेक्स 15 minutes इफ़ यू नो हाउ टू डू इट. और आपको एकदम ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप रोज़ करने लगोगे. बट फर्स्ट टाइम में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज दीज रेजर्स आर रियली शार्प एंड बहुत ईजीली आपको कट लग सकता है. तो एंड मेक श्योर यू आर डूइंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर. जैसे कि अगर यहाँ पे आप यू आर डूइंग इट ऑन द चिन एरिया, सो यू आर डूइंग इट दिस वे, कि एकदम नीचे के बाद. मैं इसको अपर लिप्स के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज दीज रेजर्स जो हैं, ये वाले शीन के रेजर्स, दे आर वेरी शार्प. द वंस आई गॉट फ्रॉम Amazon आर नॉट एज शार्प एज दीज रेजर्स, बट कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उससे भी उतना ही अच्छा क्लीन होता था फेस जितना इससे होता है. बट दीज आर लिटिल मोर शार्प, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस भी बढ़ जाते हैं कट लगने के. बट ये यहाँ मतलब अपर लिप्स के जो हेयर हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं. और आई हैव अ सेंसिटिव स्किन एज आई टोल्ड यू, सो माई स्किन गेट्स रेड आफ्टर इट. बट ऐसा नहीं है कि यू विल गेट पिंपल्स और आपको मतलब वो स्किन ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता. और हेयर भी बहुत मिनिमल आते हैं आपके. तो अगर आप रोज़ कर रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. बट एक दिन छोड़ के एक दिन, या जब दिख रहे हैं तब कर लिया, दैट डिपेंड्स ऑन योर ग्रोथ अगेन. एंड माई स्किन, एज आई वॉज टॉकिंग, माई स्किन गेट्स रेड एज यू कैन सी इन द वीडियो. थोड़ी सी स्किन मेरी जो है वो रेड हो जाती है, बिकॉज सेंसिटिव स्किन है. एंड यू आर यूजिंग रेजर, राइट. बट वो 15-20 मिनट के अंदर मैं आईज वगैरह रब कर लेती हूँ, एंड आई वॉश माई फेस, तो वो एकदम ठीक हो जाती है. बट दैट्स फाइन, कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है इसके. देयर इज नथिंग, देयर इज नो हार्म इन इट, एवरीवन यूजेज इट. And you just need to be very patient. Again, you have to be very slow when you're doing it, because you do not have to ruin your face, right? And yes, that's just it. I'll link down the ones I got from Amazon.
because Shein is banned, but the Amazon ones are really good. And इसके अंदर there is a pack of 3 that comes, और 3 razors आते हैं, and they're very good, they're very sharp, and make sure you keep them clean. And कुछ time बाद you need to change those razors, because इतने टाइम तक वही रेजर्स यूज़ करना, उनका वो शार्पनेस भी ख़त्म हो जाती है, एंड इट्स जस्ट like hygiene के लिए भी you should not use it for a very long time. You need to switch the razors after some time. So I'll link down the best ones from Amazon, and they're not very high price. They are very decently priced, so you can easily buy them, and it works for like 1 month, and then you have to change them, but that depends on you as to how you are using it and how often you are using it. And yes, next I'm going to be talking about shaving, and shaving for body hair, and I use this Gillette razor which is specially for women, and ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी स्टोर से, एंड कोई एंड ऑल्सो फ्रॉम Amazon. I'll link it down in case you want to buy it. And these ones are like the best razors I have used. वो local वाले razors are really harsh on your skin, so this razor cost around 200, but they are really good. And आपको ऐसे अलग blades भी मिल जाते हैं, so you can also buy them if your blade is worn out and you want to get new only the blades and not the body, and you can also do that. And this razor first of all is really flexible, so अगर आपको ऐसे elbow पे या wrist पे आपको करना है, so it just glides on your skin, and कोई भी आपको bumps, कोई भी cuts नहीं लगेंगे, because it is very flexible. But आपको ये भी बहुत smoothly करना है, ऐसा नहीं है that you are pressing it hard on your skin, क्योंकि हार्ड प्रेस करने से इट्स नॉट गोना मेक अ डिफरेंस, इट जस्ट वर्क्स द सेम अगर आप इसको बहुत स्मूथली करें. एंड आई वुड प्रेफर कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन ही कर ले, बिकॉज अगर मतलब बहुत टाइम बाद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर डेली बेसिस या एक दिन छोड़ के भी कर रहे हो तो बहुत जल्दी से जो है वो, मतलब यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, राइट. तो आपको पूरा ध्यान नहीं देना पड़ता. एंड जो हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत छोटी छोटी आती है, सो दैट्स ग्रेट. एंड इट्स अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर waxing, because firstly waxing is really time consuming, secondly it's very painful. I see no harm in shaving, and first I used to use shaving gels and foam ones, बट उसको यूज़ करके मेरी जो स्किन थी वो डार्क होने लग गई थी अंडर आर्म्स की, सो आई जस्ट गिव इट अप एंड आई सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि शेविंग जेल्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं विच यू कैन यूज़. एंड आई गॉट टू नो अबाउट कोकोनट ऑयल, एंड आई कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हाउ द स्किन फील्स आफ्टर शेविंग फ्रॉम कोकोनट ऑयल. It's like the best way you can use for shaving. What you have to do is, as I'm showing in the video, you just have to take some amount of coconut oil in your hands and then rub it all over your arms and wherever you want to shave, and then take your razor and you have to go it against the hair growth, right? So as in the facial hair you have to go in the direction, but in the बॉडी है you have to go it against, because उससे आपके जो हेयर है, जो छोटे छोटे अंडर ग्रोथ भी है वो भी निकल जाएगी if you are going it against. And I would suggest you guys कि आप इसको थोड़ा डायगनली करें, एंड डायगनली करने से आपकी जो सारी हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगी. And I do it all over my arms, all over my legs and underarms. कभी कभी मैं पेट पे भी कर लेती हूँ. And the skin feels really soft after you shave with coconut oil. And shaving gels are quite pricey, so I just find it the best thing. मैंने बहुत महीनों तक shaving gel यूज़ किया था, but then
when I found out about coconut oil, there is no turning back because I'm completely in love with how my skin feels. And now there are few tips that you need to keep in mind. You cannot just take coconut oil and rub it all over your arms and start shaving. Now firstly you have to prep your skin for the shaving. Now what you have to do is you have to exfoliate. I cannot force it enough that how important it is to exfoliate. You can exfoliate with the exfoliators, and काफी सारे exfoliators are there in the market. And there are also natural exfoliators, like there are scrubs, there are sugar scrubs that you can use and all of that. So you need to exfoliate the area you're going to shave, and then you have to clean that area and then apply coconut oil and then start with shaving. Now this is all about pre-shaving. Now what you have to do is pre and post shaving are as important as shaving, right? And you need to take care of your skin, otherwise it will make your skin look dry, harsh. Post the shaving, what you have to do is you have to apply moisturizer. A good moisturizer, any kind of moisturizer will work. There is no precise moisturizers for shaving and for post shaving. You can take any kind of, like literally any kind of moisturizer, but you can also take scented free and fragrance free, because that will kind of itch your skin और थोड़ा सा harsh हो सकता है. बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा. मेरा जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर मैं रोज यूज करती हूँ वही यूज करती हूँ. तो आफ्टर शेविंग भी तो एज सच कुछ नहीं हुआ. एंड it does not have to be any precise moisturizer, but make sure you do moisturize the areas you have shaved. That's really important, because your pores, जो आपके pores हैं, they are open at that time after shaving. So you need to apply moisturizer ताकि वो undergrowth जो है वो वापस से बाल ना आने लग जाए. And you cannot just skip that step ever. And it just takes, मतलब अगर आप रोज कर रहे हो तो सिर्फ 15 से 20 मिनट लेंगे, बिकॉज यू जस्ट हैव टू रन इट थ्रू. बट अगर आप हफ्ते में एक दिन कर रहे हो तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है. बट दैट्स जस्ट इट. Here I'm also showing you how to shave your underarms. Now there's nothing to be ashamed about it, first of all. And as I said, I wanted to be very informative in this video, so that's why I'm showing you each and everything that I do, so you're not left with doubts after you see this video. And I'm assuring you that you will be convinced that shaving is all right and there is no harm in doing it. And इसीलिए I'm showing you shaving my underarms, and that's just completely fine, because I mean सब लड़कियां करती हैं shave underarms, right? So there is nothing disgusting about it. So then as I'm showing it, then you have to go it against and all over your underarms, and make sure you exfoliate your underarms as well and moisturize your underarms, as I said. And yes, there's no technique, but आपको बहुत ज़्यादा careful रहना that you do not get cuts, and बहुत ज़्यादा patient रहिए, कोई rush नहीं है. And your skin will feel amazing and soft after shaving from coconut oil. So I would suggest कि आप coconut oil use करिए and then see the results yourself. Now I want to also include this point that you can shave your bikini hair as well. Now there is no yes, that's a sensitive area to shave on, but that's okay if you are really doing it, because waxing there, oh my god, I just cannot even imagine going for waxing over there, down there, and I just cannot. Ew.
So I was really scared the first time, and मैं बहुत टाइम तक इतना मैं कर नहीं पाती थी because मेरे को बहुत डर लगता था that I will get cuts. And but then I tried and it was completely fine, but you have to be very smooth because you cannot just go very harsh with your skin over there, because that's a very sensitive area, right? And I do it all the way down there, and there is no harm, there is no bumps, there is no मतलब हाँ, you, but make sure you cut your hair very short, the shortest you can go. And but make sure you are cutting your hair and before shaving, because ज़्यादा लंबे बालों को शेव करना will be difficult. So I would recommend you that you cut your hair down there before shaving to the tiniest. Just used to go it against the growth down there. But then it used to be very harsh, and you know it मतलब बहुत थोड़ा सा मेरे को ऐसे itchiness होती थी. But then I saw the videos, and you have to go it in this way, like this way. So you have to go it in a slanting way, like पूरा horizontal जाना है, and then do it all the way. Or but make sure you are moisturizing it, and you're also exfoliating it. And yes, also one thing that I would recommend you shaving down there after you are taking bath, because then your hair is kind of smooth और बहुत ज़्यादा हार्श नहीं फील होगा. बट बॉडी हेयर पे आप कर सकते हो बिफोर टेकिंग बाथ, बट फॉर द बिकिनी हेयर you have to do it after you are taking bath, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और easily रिमूव हो जाएंगे, so you'll not get razor bumps. And also the hair down there is a little thicker than the body hair, so you need to so it requires a little more effort than the rest of the body hair, and this area is like more prone to getting cuts and razor bumps. So be patient, be smooth, and do it very slowly down there. And you can do all of this as per your requirement, as per your growth, your hair growth, your facial growth. And yes, I hope you find this video really informative. I just told you what all information I had, and I hope that you find something useful in this video. And I just think that this video was of any help to you guys. That's it for today's video. I will see you in my next video. Bye.